बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस 365 ट्यूटोरियल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑफिस 365 को कैसे इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ ये भी कि इसे कैसे एक्टिवेट करना है। अब ये सारे टूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ऑफिस 365, C2R और ऑनलाइन KMS, ये 3 फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है। patf.pk पर मौजूद हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स मौजूद हैं। यहाँ से आपने इन तीनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले वो फोल्डर ओपन करेंगे जहाँ ये सेव हैं। Windows R. Run dialog. Type the name E. Colon. Enter. E colon. Local disk left parent ES. Software. Enter. Shell folder view. IO. Office uninstaller. 3 of 365 Pro plus retail.im. 9 of 12. O365 ये वो फाइल है जो आपके पास डाउनलोड होकर आएगी। ये एक आईएसओ इमेज है। इस पर आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगी। Enter. Shell folder view. Items view list box. Items view multi-select list box. Not selected office. 4/14/2020 12:24 p.m. file folder. अब आपने एस प्रेस करना है। S. Setup.x. 3 of 3. सेटअप फाइल आएगी, इस पे एंटर प्रेस कर देना है। Enter. User account control dialog. Do you want to allow this app to make changes to your यूजर अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा, इसे यस कर देना है। Yes button? Alt followed by Y. लेफ्ट एरो करने से भी यस बटन आ जाता है या फिर 2 टाइम टैब करने से भी यस बटन आ जाता है। इस पे एंटर कर देंगे। Enter. Welcome to your new office. DVD drive left parent G colon right parent 16.0.12527 items view multi-select list box setup.x 4/14/2023 33 of 3. Welcome to your new office. DVD drive left parent G colon right parent 6. सेटअप स्टार्ट हो गया और साथ ही मिनिमाइज भी हो गया। सम टाइम ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो आपने आल्ट टैब से इसे ऊपर ले आना है। Microsoft Office, Microsoft Office, Microsoft Office installation UI, Microsoft Office installation 58% completed, Microsoft Office installation 58% completed, progress bar 58%. ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। Microsoft Office installation 96% completed. Microsoft Office installation 100% completed. Office is now in. Close. Button Alt plus C. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई और क्लोज बटन हमारे सामने शो हो गया। इस पे एंटर कर देंगे। Enter. DVD drive left parent G colon right parent 16.0.1. यहाँ पर ये आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगता है। मैंने फ़िलहाल वीडियो की लेंथ शॉर्ट रखने के लिए दरमियान में इसे पॉज़ कर दिया था ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। अब हम नेक्स्ट इसको एक्टिवेट करना सीखेंगे। बैक करेंगे। Items view list box. Items view multi. एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपने C2R को रन करना है। जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो ये एक जिप फाइल होगी। इसे एक्सट्रैक्ट करके फाइल फोल्डर बना लेना है। सी प्रेस करते हैं इसके फोल्डर पर जाने के लिए। C C2R-R C C2R-R2V.zip 6 of date type WinRAR zip archive. देखें ये जिप फाइल है, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है। C C2R-R2V 1 of 12. इस पे एंटर करेंगे। Enter. Shell folder view. Items view list box. Items view multi. C2R dash enter. Items view list box. Items view multi. जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें 4th नंबर पे आ रही है कन्वर्ट वाली फाइल, उस पे जाना है डाउन एरो से। X6 X80 convert dash C2R.cmd 4 of 5. इस पे एप्लीकेशन करेंगे। Applications. Context menu. O open O. ए प्रेस कर देंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। A run as administrator A.
एंटर प्रेस करेंगे। Enter. Leaving menus. C2R-R2V. Items view multi-select list box. Convert C2R.cmd 9/28/20 Windows command processor. Verified pub. यूजर अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा जिसे यस कर देंगे। Do you want to yes button? Alt followed by Y. यस करने के बाद आपने वेट करना है, कोई भी की प्रेस नहीं करनी जब तक जाज अनाउंस नहीं करता प्रेस एनी की। एंटर करते हैं यस पर। Enter. C2R-R2V. C:\/Windows /System32 \/CMD.X Checking office licenses Cleaning current office licenses Installing Office volume licenses O365 Pro plus Suite dash Greater Mondo licenses Installing missing KMS client keys Finished Press any key to exit प्रेस एनी की, इस पे स्पेस बार प्रेस कर देंगे। Space C2R-R2V अब इस फोल्डर से भी बाहर आएंगे, बैक स्पेस कर देंगे। Lang Items view multi-select list box. Shell folder view. C2R-R2V 9/19. Shell folder view. Items view list box. C2R-R2V. HP-LaserJet-1018. Items view list box. अब हमें नेक्स्ट ऑनलाइन केएमएस को रन एज एडमिन करना है। इसे जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये भी जिप फाइल होगी, इसे भी आपने फाइल फोल्डर बना लेना है। Online KMS activation script v5.0.cmd 34. जब आप इस पे आएंगे तो एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications context menu open ए प्रेस कर देंगे। A run as administrator A. रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे एंटर करेंगे। Enter. Leaving menus. List left parent right parent. Items view multi-select list box. Online KMS activation script v5.0.cmd 7/28/2023 10 p.m. Windows commands no button. Alt followed by N. यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स का मैसेज है, इसे यस करेंगे। Do you want to yes button? Alt followed enter. Local disk left parent right parent underline vertical bar left bracket 1 right bracket readme vertical bar आगे इस तरह की स्क्रीन आपके पास शो होगी। इसमें आपने 2 प्रेस करना है और ये 2 क्यू के ऊपर वाली लाइन में से करना है। 2. Note: make sure you are connected to internet for successful activation. Left bracket C right bracket continue to. अब आपको मेक श्योर करना है कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है। सी प्रेस करेंगे कंटिन्यू के लिए। C state -mon 09/19/2022 time :03058.21 checking internet connection internet is connected trying with KMS server kms.dbboy.er. Checking Windows left parent R right parent professional edition product is permanently activated. Activating Office 16 Mondo VL KMS client edition. Product activation successful. Remaining period: 180 days left parent 259200 minutes right parent. No installed Office 2010 product detected. Press any key to continue. प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। स्पेस बार प्रेस करेंगे। 2C underline. अब इसे ऑल्ट F4 कर देंगे। आपने देखा कि लास्ट पे मैसेज मौसूल हुआ था कि प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, 180 डेज पीरियड रिमेनिंग। इसका मतलब है कि ऑफिस 365 180 दिन के लिए एक्टिवेट हो चुका है। ये आपके लिए एक्टिवेट करने का मेथड जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आप इसे सीख सकें, लेकिन अगर आप इसके फुली फीचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आपने इसे परचेज करना है। आपने अब लास्ट एक स्टेप और करना है अपने सिस्टम्स पर कि ऑफिस की कोई भी ऐप ओपन करनी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही को ओपन कर लें। विंडोज आर करेंगे, विन वर्ड लिखेंगे WINWORD और एंटर करेंगे। जब ये ओपन होगा तो आपके सामने एक्सेप्ट बटन आएगा, इस पे आपने एंटर कर लेना है।
एंटर करने के बाद प्राइवेसी सेटिंग्स आएंगी। अगर आप कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे टैब या एरो कीज तो क्लोज बटन पर आपका फोकस होगा। इस पे दोबारा एंटर कर देना है। अगर प्राइवेसी सेटिंग्स में क्लोज बटन पे फोकस नहीं होता तो टैब से आप इसे तलाश कर सकते हैं या फिर एस्केप भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिस ओपन होने के बाद डायरेक्ट एक्सेप्ट बटन पर फोकस नहीं होता तो टैब के साथ भी इसे ढूंढकर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता कर सकते हैं।